आज जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक ऐसा टाइम दिया है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Education is a key to any successful future for an individual, but not just for individuals, for the nation. And I think this is what this charity is hoping to achieve. So without further ado, I'd like to introduce our first guest speaker tonight, and that's Alison Darnborough, who's the Director, Academic Admissions Ambassador for South Asia, and she's an associate as well for Namal College. So please welcome Alison Darnborough. Hello, good evening, Assalamu alaikum. I'm delighted to be here this evening representing the University of Bradford. Namal College is an associate college of the University of Bradford. Only one of 4 associate colleges the university has around the world. The university was founded almost 50 years ago, the University of Bradford, so this is only the 4th associate college. We are incredibly proud to be part of this amazing, amazing project, and it has our full commitment from the university. Thank you all for coming this evening, and really just to make a plea, we need your help. Please help us to support the college, to do anything you can in whichever way you can. I hope you have a very good evening this evening. Thank you for coming, and enjoy the evening. Thank you. University has given a lot of helping hand to start the education in this college. The main focus of this college is to provide education to the deprived people of Pakistan. Mianwali is the place where the college is situated.
The surrounding areas are also very deprived, and this college is providing education, which is the University of Bradford education, at the doorstep of those deprived areas. And most of the students, 95% of the students, are being sponsored over there because they can't, they are talented, they are admitted on merit, but they cannot afford to get education. Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Nothing more important than also investing in the colleges, such as Namal College, to train young people and give them the skills to not just build their own futures, but to build their country's future. Namal College is doing fantastic work, and as you know, Pakistan desperately needs as much education as possible. Pakistan is only going to rise above if many people do get education, good education, and of course literacy level is increased. So I think that the fact that so many of you are here, please dig deep in your pockets later when the auction occurs, and thank you for listening. We're going to be having our food shortly, but in the meantime, Jessica is now here to come and entertain us. So I think a big round of applause for Jessica. and a beautiful lake supported by a dam built in 1913 on the other. The road in front of you is Talagang Miawali Road. It connects to Islamabad and Lahore through motorway, and going towards Miawali, it connects all the way to Waziristan and tribal areas, and eventually Karachi through Indus Highway. When I saw this wilderness, I imagined a knowledge city. The sort of knowledge city like Oxford University, where I went to and which inspired me. And hence you see Namal College,
which in my opinion is the beginning, inshallah, of the biggest knowledge city in Pakistan. The land stretches for miles and miles ahead in this wilderness, where I hope there will be medical schools, there will be engineering schools, there will be textile schools. It will become the center of education in Pakistan, in a beautiful environment where you have a lake, where the students will have recreation, and then you see the Salt Range, one of the oldest rock structures in Pakistan, with the oldest historical monuments lying up in these ranges. And of course, then there's this road which goes all the way to Islamabad, and the other way it goes to the Indus Highway and also to the tribal areas of Pakistan, specifically Waziristan. Imran Khan, who I've known since the age of 18, has continuously shown that if you have the spirit of passion, never give up. For those who struggle, always touch the skies. So this is a song I'm really happy tonight to fly in from New York to really bring you all together in unity. So if you could put your hands together. Come on, let me hear you people out there. Make it louder, please. And don't be afraid. Put your hands together. This is a song of hope and peace. Everyone in the back, put your hands together. Sing with me. Pakistan hai tumhara, Pakistan hai hamara. I can see young people. Apna ghar, apni sarzameen, sab kuch hai. Stand up. सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा. So Manchester, if you feel the spirit of passion, I want you to put your hands together right now. We're going to have the keynote speaker, Imran Khan, coming on stage. Put your hands together now. Come on. Show your passion. I want you to welcome the one and only Mr. Imran Khan. Put your hands together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा जो मिशन है वो पॉलिटिक्स है, वो तहरीक इंसाफ है. लेकिन मेरा जो पैशन है वो नमल यूनिवर्सिटी. मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान में
एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, नमल यूनिवर्सिटी। और मैं चाहता हूं और मेरी सोच ये है कि ये बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ी नॉलेज सिटी बनेगी। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर आप हार ना माने, सब कुछ हो सकता है। ये आपके सामने जो है ये कोई ख्वाब है, लेकिन मैं आप सबके सामने दावा कर रहा हूँ अल्लाह पे मान रख के कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का एजुकेशन का सेंटर बनेगा। यहाँ हर किस्म की डिफरेंट स्कूल्स लेके आएंगे, इंजीनियरिंग स्कूल लाएंगे, मेडिकल स्कूल्स लेके आएंगे, टेक्सटाइल के लिए ख़ास तौर पे, एग्रीकल्चर के लिए स्कूल्स। और ये वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलाका बनेगा जो एक्सपैंड करता रहेगा, क्योंकि हमारे पास 2000 एकड़ ज़मीन मिल चुकी है, हम 1000 और लेने लगे हैं। और ये जो सारे इलाका है इसके अंदर एक ऐसा इदारा बनाएंगे, एक शहर बनाएंगे जो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने सारा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने लीडरशिप दी, साइंटिस्ट निकले, लीडर्स निकले, वकील निकले, हर शोबे से लोग निकले। उसी तरह नमल नॉलेज सिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देगी आने वाले दिनों में। इमरान भाई, मुझे ये याद है कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपकी यही हिकमत अमली थी कि आप ऑपोजिशन को, चाहे जितनी भी मुश्किल ऑपोजिशन क्यों ना हो, वेस्ट इंडीज़ जो उस ज़माने की सबसे मुश्किल तरीन टीम थी, दुनिया डरती थी उनको खेलने के लिए, क्योंकि मैंने आपको देखा है क्रिकेटर्स जो हमारे टीम मेंबर्स थे उनको बताते हुए, आप उनको इतना पैशन दे देते थे कि आप कहते थे कि कोई भी हर्डल, कोई भी चैलेंज जो है वो बड़ा नहीं है। और आप लोगों ने ये करके दिखाया कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम भयानक टीम थी, 4 फास्ट बॉलर्स थे, पाकिस्तान ने उनको हराया, उनके मुल्क में भी जाके, पाकिस्तान में भी आके। और फिर अगर आगे चलते जाएं, यही हिकमत अमली आपने अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी यूज़ की। जब शुरू में आपने लोगों को कहा कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, तो उनको नज़र नहीं आता था कि ये किस तरह बनेगा, लेकिन आपके अंदर वही जो बात आज आप नमल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वही हिकमत अमली उस वक्त भी आपने यूज़ की। तो सवाल मेरा ये है कि जो लोग रियलिज्म में फंसे हुए हैं, स्टेटस को के अंदर फंसे हुए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, उनको आप क्या कहेंगे? क्या नमल ही एंड है या इसके आगे भी कुछ और है? सलमान, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि अल्लाह ने इंसान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया है, लेकिन इंसान इस पोटेंशियल को क्यों नहीं पूरा करता? जब आप ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है, तो ये आपके पोटेंशियल के कैप कर देता है, लिमिट कर देता है। मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ने हमारे में इतनी ताकत दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तब तक कुछ कर सकते हैं कुछ भी जब तक हम हार ना माने। I'd like Imran, if you would like to take a seat, I'd like to help you this evening, inshallah, to raise the money that we require. And Imran, inshallah, will come back to answer more questions. Salman will be coming back to look after you. I would hate to see Imran standing next to me for the next 30-40 minutes. If we look at the Quran, the first word Allah subhanahu wa ta'ala mentions is Iqra. Read in the name of your Lord. Read. From the very outset, we are talking about education and knowledge. Even the Prophet ﷺ, peace be upon him, even at the time of Badr, when there were some prisoners captured from the opposition, you know what the Prophet said? He said, no man should be shackled or tied up. They will eat and drink with us. Any non-Muslim, any of the prisoners who can teach 10 Muslims to read and write, he'll be set free. Pakistan is a very abundant country. It has beautiful resources.
It is the 7th atomic power in the world. It is the 8th largest wheat producer, the 7th largest rice producer, the 10th largest milk producer, the 2nd largest dam in the world, 111 sites of iron ore, 5th largest gold mine in the world, 2nd largest salt mine in the world, the 6th largest army in the world, and the 5th largest coal mine in the world. This will be, as Imran has mentioned, the first ever city of knowledge on the scale of Oxford University and Cambridge University in Pakistan. And I think that deserves a round of applause. The site is set in 3,000 acres. There are 7 school buildings or university buildings. There are 4 hostels, 62 faculty accommodation units, 400 teachers and 7,000 students and a mosque. जो नमल यूनिवर्सिटी है, जो हम पहली प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बनाई है देहाती इलाकों में, क्योंकि शहरों में है, देहात में कुछ नहीं है, 70% पाकिस्तानी देहात में है, तो उसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और क्योंकि हम अब उसको एक्सपैंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, इसके और फेजेस में जा रहे हैं, तो आज का सिर्फ मकसद था उस यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करना। इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक ऐसा टाइम दिया है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। एक पाकिस्तान में जिस तरह अरब स्प्रिंग थी, उस तरह पाकिस्तानी इस वक्त सब मोबिलाइज़ होते जा रहे हैं तब्दीली के लिए, और तब्दीली पाकिस्तान को बचा ही नहीं सकती, एक अजीम मुल्क बना सकती है। 18 साल की एज से मैं जानता हूँ इमरान भाई को। मैंने इनके साथ क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, क्लब क्रिकेट भी खेली है, और बांग्लादेश के टूर पे भी मैं गया था जब मैं कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में। तो वो वाला वक्त है क्रिकेट का। फिर उसके बाद शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का दौर आया, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का। तो मैंने इनके फ़र्क पहलू देखे हैं, और उसमें 3 चीज़ें जो बड़ी हैं जो नज़र आती हैं कि इमरान खान वो हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए है, जिनकी जान पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने जो भी काम किया अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए किया। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि वो कभी गिव अप ही नहीं करते। ना क्रिकेट में उन्होंने गिव अप किया, ना हॉस्पिटल बनाने में उन्होंने गिव अप किया, और ना पॉलिटिक्स में उन्होंने किया। सो ही इज़ अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। थर्डली जो उनकी है खूबी कि वो इवॉल्व करते हैं, हर स्टेज पे अपनी ज़िंदगी के इवॉल्व करते गए। तो जब उन्होंने मुझे अभी दिसंबर में जब कराची में हुआ जलसा 25 दिसंबर को, तो मैंने जब जाके पाकिस्तान का नेशनल एंथम और जज्बा जुनून वहाँ जाके गाया, तो 3 लाख लोग एक आवाज़ में हमारे साथ ये शिरकत कर रहे थे। इट शोज़ कि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। और मैं बहैसियत एक फ़नकार, पाकिस्तानी फ़नकार, चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉजिटिव तब्दीली आए, और वो पॉजिटिव तब्दीली जो है मैं समझता हूँ सिर्फ इमरान खान ला सकते हैं। मीडिया जो है आजकल की दुनिया में बहुत पावरफुल उसका इम्पैक्ट है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या इंटरनेट मीडिया जिस तरह आपने कहा, इसको पॉजिटिवली यूज़ करें और अवेयरनेस रेज़ करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों को शऊर लाएं, चाहे वो समाजी है, सियासी है या रूहानी है। I've been involved in NAML since 2006, and so I've seen the college develop, grow, expand. The university delivers University of Bradford degrees at NAML College, so students there are studying at the moment computing, engineering degrees. We will develop further in terms of business and management courses and other courses. So they're studying exactly the same courses at NAML that our students at Bradford are studying. Their exams are taken exactly the same time, so the quality of education is quite incredible. But they're studying in Pakistan, not in the UK. Assalamu alaikum, I'm Noor. Assalamu alaikum, I'm Ali. Assalamu alaikum, I'm Fareed. We're here to raise money for NAML in Pakistan. We're here to get for charity for NAML College for education in Pakistan. We're here for Imran Khan, and if we can do it, you can do it. We hope that you raise a lot of money for this dinner. Hello, Assalamu alaikum. मैं नाज़िया रुबानी हूँ. मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ. We're here to join Imran Khan on a very fantastic occasion. We are here for this fundraising, which is
which is really is amazing chance for people to support their families and friends and the people that they haven't got a chance to have a good education. My name is Alia Rafiq and I'm supporting the Namal University in Pakistan. It's such a wonderful event and we're so proud to be here to support Imran Khan. I'm just here to support Imran Khan with his good cause. I'm very pleased. It's a very successful evening, and inshallah I'll try to support him again. I've come here to support Imran Khan for his Namal University. I've been supporting him in his political career as well. I'm here to support the brilliant project that Imran has put together. I think it's a wonderful project, and I think everybody should donate as much as possible. The evening has been fantastic. The food's been great. And I've had a really good time. To thank TV Apex for being here and covering the event. It's been very good. We'd like to wish Imran Bhai and everyone every success in the Namal College. It's a great initiative and we hope Allah blesses it, makes everyone successful and we can raise educational levels of Pakistanis, and inshallah this will be the start of the future of Pakistan. Basically I like to say to everyone, please support this good cause and make a difference to Pakistan and its youth. बहुत अच्छा इवेंट हुआ, 4 लाख तकरीबन रेज हुआ. Yeah, fantastic review. It's been a great evening. It's a pleasure to have the company of Imran Khan Saab here, and we thoroughly enjoyed it. It was for a good cause. We hope that Namal College soon reaches its highest heights, and we wish it the best of success in the future. We're here in support of Imran Khan. Delighted to be here, delighted to be part of such a successful event. I think from memory, I've been here all my life, that this is probably the most successful event that I've ever attended. इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए हैं माशाल्लाह से, और अभी और भी करना चाह रहे हैं. तकरीबन 200 एकड़ का मुरब्बा ख़रीदा हुआ उन्होंने जिस पे काम करना है, तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे साथ. It was great to have an inspirational visionary like Imran here, and it showed that the whole community was behind him, raising in such an amazing figure. So well done, not only to Imran but to the whole community as well for getting together behind him. Today's function has been a great success, जहाँ पे माशाल्लाह से 1500 लोगों से ज़्यादा लोग आए हैं. It's been a full house, very busy, very hectic, days and months of planning. Alhamdulillah, we have raised over £400,000. We raised over £400,000 in Sheridan Suite, and it's been amazing. This is for Namal College in Mianwali in Pakistan, and you have donated your time and your efforts for this college and for the education of Pakistan. Now, we'd like to all thank you so much and give a good few words to the people who've donated tonight. I think there's a big thanks goes out to everyone, the organisers, the team. I mean, we did all the sound and light, but it's all the team behind us who do all the work. So I think a big shout out to all the team, all the video guys, all the camera crew, all TV Apex, and of course the organisers from yourselves. And all the volunteers who put in the hard work. Put your hands together, come on. Oh, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान. Will you sing with me? ऐसी ज़मीं और आसमां, come on, sing it. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल जा
I'm Salman Ahmed and you're watching TV Apex. है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान.